Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. I am super duper excited for this video because today's video is in collaboration with one of your favorite creators. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं diet swap with none other than Anam. Now in case you're not aware, I have this whole series on my channel जिसमें मैं अलग-अलग creators के साथ अलग-अलग collabs करती हूँ and I've already done this diet swap video with I think Mridul and Manasi Mau. Both of them were really appreciated by you guys and that is why I'm back with another डाइट स्वॉप चैलेंज. यू नो मुंबई के क्रिएटर्स के साथ कोलैब करने में एंड ऐसे वर्चुअल कोलैब्स करने में स्पेशली मुझे बहुत मजा आता है बिकॉज आवर लाइफस्टाइल्स आर वेरी डिफरेंट, आवर डाइट्स आर वेरी डिफरेंट. हमारे यहाँ जो सामान द काइंड ऑफ फूड वी हैव हियर वो काफी डिफरेंट होता है. सो इट्स ऑलवेज अ वेरी फन एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. सो क्वर्की स्क्वाड इज अवेयर दैट आई एम ऑन दिस होल हेल्थ जर्नी राइट नाउ एंड मैं आजकल डाइट कर रही हूँ. सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ डाइट फूड टू अनम. यू गाइज मस्ट चेक आउट दैट वीडियो. आई विल लिंक इट बिलो, आई विल प्लेस इट अबव. प्लीज क्लिक इट, वॉच इट एंड देखने के बाद वापस आना इधर ये देखने के लिए. सो लेट्स गिव अ ग्रैंड वेलकम टू Anam on this quirky channel and let's hear it from her कि आज मेरी डाइट में मैं क्या-क्या खाऊंगी. Hi, my name is Anam. I go by Anam C on the internet. I've been on YouTube for about 7 years-ish, but I've been a creator for 12 years. I met Aditi in person for the first time only like last month in October, November, but I feel like we really got along. I feel like Aditi's energy and vibe is so honest and so real, so raw. It happens less in our industry when you meet someone and their online personality matches their offline personality to the T. And to me, when people say that to me, it is a compliment of the highest order, and so I mean that as a compliment, Aditi, obviously to you. I had a great time with you. I see us really vibing in general on like an emotional and mental wavelength, and I'm excited to take over your diet today because I'm going to tell you what to eat and what not to eat. I'll keep giving you options along the way, but I'm excited to be able to dictate what you're going to eat today. So you know what? Let's get this video started. हाय, गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया है एंड मेरे खाने का वक्त भी हो गया है एंड अदिति को बताने का भी वक्त हो गया है कि व्हाट शी शुड हैव फॉर ब्रेकफास्ट. इफ़ यू वॉच माई व्लॉग्स रेगुलरली दिस विल कम एज नो सरप्राइज टू यू. आई एम हैविंग एग्स केजरीवाल फॉर ब्रेकफास्ट एंड दैट्स व्हाट आई थिंक अदिति शुड हैव एज वेल. एग्स केजरीवाल का नाम एक पॉलिटिशियन के नाम से काफ़ी मिलजुलता है बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट जेंटलमैन. दिस एक्चुअली इज़ अ डिश दैट केम अबाउट इन बॉम्बे. इनकी खुद की रेसिपी थी जो यहाँ पे उन्होंने एक वेलिंगटन नाम की जगह पे बताया था कि ऐसे ऐसे बनाओ एंड वो इतना हिट हो गया कि इट्स बिकम अ वेरी 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 फेमस एग्स डिश. आई लव हैविंग एग्स केजरीवाल फॉर ब्रेकफास्ट एंड इसका डिटेल रेसिपी तो मेरे चैनल पर है बट मैं एक बार बता देती हूँ जस्ट इन केस अदिति हैज़ नॉट सीन इट एंड इन केस शी इज़ नेवर हैड वन बिफोर. इट्स बेसिकली लाइक अ हाफ फ्राई सनी साइड अप बट इसको आप एक करारे अच्छे टोस्ट के स्लाइस पे डालोगे और इस एग और टोस्ट के बीच में एक चीज़ स्लाइस जाता है एंड देन अलग से आप थोड़ा सा प्याज, टमाटर, कोतमीर को थोड़ा सा सौते करके इस अंडे के ऊपर डाल दोगे एंड यू कैन हैव इट विथ ए नाइफ एंड फोर्क और यू कैन हैव इट इन एनी अदर फॉर्म एज वेल. ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट योर नमक, मिर्ची, अ लिटिल बिट ऑफ लाल मिर्ची एंड इफ यू वांट यू कैन इवन पुट सम ऑरिगानो एंड चिली फ्लेक्स ऑन दिस. आई लाइक टू लीव माई एग योक थोड़ा सा रनी बट इफ यू वांट टू कंप्लीटली कुक योर्स आप गो अहेड, बी माई गेस्ट. Jerry, my husband, likes his really nice and cooked, but I want to give you a little tip, especially while cooking, because you have to get through the entire slice of toast. It's nice to leave it a little bit runny because then there's that nice dry and wet combination. I'm going to continue eating now. And just one last thing about breakfast. I like to have my eggs with some tea to help wash it down. And the tea I have is regular society chai with lots of adrak in it. So adrak ki chai with eggs Kejriwal is a bomb combination. Aditi, I really hope yours turns out just as good as well. I can't wait to see how you figure it out. And I want to know what you think of it. Okay, so you guys heard her. I have to make एग्स केजरीवाल फॉर ब्रेकफास्ट विद अदरक वाली चाय. नाउ अनम ने अपने चैनल में एक्चुअली एक बहुत अच्छा शॉर्ट डाला हुआ है विद अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड रेसिपी ऑफ हाउ टू मेक इट. सो आई एम गोना फॉलो इट थ्रू एंड ट्राई टू नेल इट एज मच एज पॉसिबल. सो आई हैव ऑल माई इंग्रेडिएंट्स लाइंड अप राइट हियर. हमारी अदरक वाली चाय के लिए वी हैव ग्रेटेड अदरक राइट हियर. वी हैव धनिया एंड प्याज एंड टमाटर फॉर आवर एग्स केजरीवाल. सो हमें सनी साइड अप यहाँ पे बनाना है और उसके ऊपर जब वो पकने लगे तो ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करना है. सो हियर वी हैव आवर ब्रेड, अंडा एंड चीज. वैसे मेरे घर में रोज रोज अंडा बनता नहीं है बट आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे मम्मी ने अलाउ कर दिया है. तेल है एंड बहुत सारे मसाले हैं. लेट्स गेट इट यू गाइस. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, never speaking, now they speaking about you, leave it alone.
Hope you grinning while you watch your bros on some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny. Pick it up like Chevy. Always like a beat. 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith. The 18 just not gon' be the same. Finna beat down generations, not gon' be in vain. Beyond. Why you gotta go? Why you gotta go? I just wanna know. I just wanna know now. True now. Cry and get old. Cry and get old. Hope you free your soul. Hope you free your soul. I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the. Alright you guys, I think I kind of snapped with this one. I feel like मेरा खाना, मेरा जो breakfast है वो इतना ज़्यादा appetizing लग रहा है. Like look at this. Don't you wanna eat this? If you are a fan of eggs, मैंने कभी भी ज़िंदगी में eggs केजरीवाल नहीं खाया. I didn't even know कि eggs केजरीवाल क्या होता है, कैसे बनता है. This is my first introduction. And as a fun fact, अनम ने मुझे काफ़ी नई नई dishes से introduce कराया. When I went to Mumbai, I remember we met at the Coconut Boy, and वहाँ पे उन्होंने मुझे मेरा पहला life का lobster thermidor try कराया था, and it was amazing. Like chef's kiss. So I'm really excited to have it with my अदरक वाली चाय. Full कप लिया आज मैंने, वैसे मैं आधा कप लेती हूँ. So मैं जो सनी साइड अप का सन है वो थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करना चाह रही हूँ. Let me just try to get a good bite of this. It's actually really good. पहली बार मुझे जिंदगी में जो एग योक है वो भी टेस्टी लग रहा है. बट ये जो मसाले हैं ना मिक्स विद कोरिएंडर, आई थिंक दे डू इट फॉर मी. आई लव प्याज एंड कोरिएंडर इन माई स्टफ. लाइक एवरीवेयर कुछ भी खाना हो मैं प्याज ऊपर से और कोरिएंडर धनिया ऊपर से छिड़कवाती हूँ. दिस इज एक्चुअली सो यम. आई एम गोना हैव माई चाय साथ में. ओह माय गॉड, काफ़ी अदरक डाला मैंने इसमें. एंड एक्चुअली इट्स परफेक्ट फॉर दिस वेदर क्योंकि दिल्ली में अभी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है. सो आई फील लाइक दिस इज परफेक्ट. अदरक वाली चाय मेरे गले को जो गर्माहट दे रही है एंड अ फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट फॉर अ हेक्टिक वर्क डे. चीज का भी बीच में बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट आ रहा है. एंड यू गाइस कैन सी आई एम गोइंग फॉर बिग बिग बाइट्स हियर. Okay, so it's time for lunch, and Aditi and I had such a lovely time at lunch over here in Mumbai. Over the lunch, she tried lobsters for the first time ever. So in honor of that lunch, for lunch I want her to have either a lobster or a crab or prawns, in any form. वो totally चलेगा. I would suggest कि अगर sushi मंगा रहे हो तो then have like a California roll but with crabs in it, or a shrimp tempura sushi. Basically anything that's prawn, crab or lobster. Think of me when you're eating this meal, Aditi. Alright you guys, so you guys heard what Anam said. I need to have seafood for lunch and I'm actually here in Basant Kunj for an event. So मैं सोच रही हूँ कि जब तक इवेंट स्टार्ट होता है, I've reached early, so यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे सी फूड होता है, स्पेशली सुशी. एंड सिंस दैट इज़ वन ऑफ आवर ऑप्शंस, आई फील लाइक कोई सुशी जाके ट्राई करनी चाहिए. अभी पीछे ईशान अपने लिए कॉफ़ी ले रहा है एंड आई एम नॉट ग्रैबिंग एनीथिंग बिकॉज आई एम जस्ट अबाइडिंग बाय अनम्स रूल्स टुडे. आज उन्होंने मेरी पूरी लाइफ कंट्रोल की हुई है. सो लेट्स फाइंड आउट अ प्लेस टू हैव ऑसम ऑसम सुशी. सो आई एम एट द मामा गोटो का section, sushi section, and this is the thing that she asked me, California sushi with crab sticks and avocado. I think this is perfect for जो अनम ने recommend किया. We also have tempura but I am excited for crab, so ये वाला एक खाते हैं. Sushi is really expensive in India. Like जापान में इतनी सस्ती sushi थी, dirt cheap prices की, and India में it's like very fancy.
Alright you guys, I am back home. The sushi today was amazing. Like I loved it. मैंने दिल्ली में ना ज़्यादातर सुशियाँ वगैरह ट्राई नहीं की हैं. And when I went to Japan तब भी मैंने निगिरी सुशी खाई थी. उसमें ऊपर salmon वगैरह डालते हैं. But I don't really have a lot of knowledge about seafood and sushi वगैरह. And fortunately AANAM से जब मैं मुंबई में मिली थी, it so happened that हमने जो lunch किया था वो seafood था mostly, and I really enjoyed a lot of the things that she recommended. So that is what happened. And when we came with this idea कि हाँ हम डाइट स्वैप वीडियो करेंगे, आई वाज रियली एक्साइटेड एक्चुअली कि मुझे पता था कि अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलने वाले हैं. अब मैं घर आ गई हूँ एंड इट इज़ एक्चुअली प्रिटी डार्क आउटसाइड. काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया एंड इट्स अ वेरी ग्लूमी डे. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक अ हॉट शावर एंड मैं मुंह धो के आती हूँ, अच्छे से स्किन केयर करती हूँ. तब तक आई वांट अनम टू टेल यू गाइस कि मेरा इवनिंग स्नैक क्या होना चाहिए. शाम के स्नैक के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू टू ऑप्शंस. वन ऑफ देम इज अ जंक ऑप्शन एंड वन ऑफ देम इज अ हेल्दी ऑप्शन. ओके, आई एम हैविंग द जंक वन टुडे. This is what's in my hand. I am about to have chai, normal chai, no अदरक की चाय or whatever, with शक्कर वाली खारी. अगर normal वाली खारी पसंद है तो वो खा लो, no problem. But I love having this when I want to treat myself. The healthy option I have for you, Aditi, is to have slices of apple. Simple, easy. Apple सबके घर में होता है. Very healthy, fills you up. Yeah, so there you go. Two options for शाम का snack. Guys, so I am feeling quite fresh right now. I just made myself a cup of tea and मैंने ये सेब काट के रखे because I was advised to have चाय के साथ slices of apple. This is what I'm up to right now. Mr. सिम्बू तो यहाँ पे चिल करने आया मेरे साथ. इसको आजकल बहुत ठंड लगती है तो ये मेरे कंबल में रहना प्रेफर करता है. And I'm editing the Sarojini Nagar haul video and that is a very weird phase to stop the video at right now. This is my second cup of tea इन द होल डे. मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ. आई हैव कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड मैं दोपहर को चाय पीती हूँ. वो भी मेरी डाइट में न्यूट्रिशनिस्ट ने दी होती है कि 2 हमारी बिस्किट के साथ ले लो. बट आई फील लाइक एप्पल के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है. आई थिंक एक मेरे डाइट स्वैप चैलेंज में पहले भी मुझे एप्पल मिला था. हाँ, आई गेस मृदुल ने मुझे एप्पल के साथ पीनट बटर दिया था विच वॉज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन. जब भी मुझे कुछ बिंज करने का मन करता है कभी कभी मैं वो खाती हूँ. बट या एप्पल्स आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट. मुझे काफ़ी पसंद है ये एज अ फ्रूट. सो आई एम गोना एंजॉय माई टी विद एप्पल एंड अ लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग एंड आई विल सी यू गाइस एट डिनर. It's time to tell you what to have for dinner, and I'm going to tell you what to have for dinner based on what I really have a craving for today. I love chicken biryani. I love chicken biryani. सोच के मैं सैलिवेट कर रही हूँ. चिकन बिरयानी द काइंड जहाँ पे ऐसे नहीं कि मसाला एंड राइस सब साथ में हो, द काइंड जहाँ पे मसाला एंड राइस अलग से आता है, आलू गला हुआ आता है. एंड फनली इनफ मैं चिकन बिरयानी में चिकन नहीं खाती हूँ, बट आई नीड इट फॉर द फ्लेवर, विच इज़ वाई आई लव चिकन बिरयानी एज मच एज आई डू. बट I want to give you two options. I know I'm giving you options, but I feel like I know you're eating healthy right now, so I don't know if you're eating rice. The other option I'm going to give you is that you can have a tandoori chicken shawarma. I know that you guys get great shawarmas in Delhi, and I think that I should leave you with that option in case you feel like going with the healthier one. Have that tandoori chicken shawarma, dip it in garlic. You know what? I'm gonna order tandoori chicken shawarma and have some right now. So yeah, while you're having that, I'm also gonna have that. I'm leaving those two choices to you. Clearly options देते देते मुझे भूख लग गई है. Now all I can think about is getting up and ordering the shawarma. Alright you guys, so you guys heard Anam. We have to get chicken shawarma. उन्होंने actually मुझे बिरयानी का भी ऑप्शन दिया था, but I'm not really a बिरयानी fan. Like मुझे कभी भी एक बहुत टेस्टी बिरयानी नहीं मिली है. So shawarma it is, and as you guys can see, I'm in a car because I'm driving off to the place जहाँ पे best Delhi के shawarma मिलते हैं, which is Budget Bites. I have a bias towards it, so I have another opportunity to meet Ishan on the same day, and अभी वो Budget Bites पे ही है, and I've asked him to make a shawarma specially for me, so वो अपने हाथों से बनाएगा. And I'm going to his shop now to have my dinner, so let's go. You are at Budget Bites. And we are in front of the shawarma वाली, क्या मैं मशीन बोलूँ, क्या बोलते हैं इसको? मशीन ही होती है, kind of. मशीन है ये.
I want तंदूरी चिकन शॉर्मा with garlic sauce. Okay. भैया ऑर्डर लिख लो फटाफट. कितने में मेरे? On the house. On the house. Honest, जैसे मुंबई में था. अच्छा. वेजिटेबल्स और सब जाते उसमें तो हमस भी होता है. मुंबई बीटरूट हमस. बीटरूट और वेजिटेबल्स और वो सब होता है वो अभी के ना. हेलो गाइस, हमारा सेटअप हैज टेकन अ मैसिव हिट. डाउनग्रेड हो गया है. बट ईशान जस्ट गॉट फ्री एंड मैंने अपना ये जो डिनर है वो पैक करा लिया था. ईशान इज होल्डिंग अ फ्लैश, फोन का फ्लैश अबव माई हेड बिकॉज दिस इज नॉट इनफ. एंड हम यहाँ खोपचे में क्यों है मुझे पता नहीं है. तो इसमें जो इनकी तंदूरी वाली प्रिपरेशन होती है डिप की, उसके अंदर ही गार्लिक सॉस मिक्स होता है. स्वीट है. इससे मेरे को नीचे फ्राइज के बेड पे शॉर्मा बिछा के दिए हुए बिकॉज आई लव फ्राइज. सो This is मुंबई वाला थोड़ा different vegetables है. हाँ, मुंबई वाला शॉर्मा में ज़्यादातर वेजिटेबल्स, बीटरूट and it's more of like authentic. जो दूसरे वाला है वो हमारे डेली आइट्स का है. Yeah. No, this. दिल्ली वाला ज़्यादा दिल्ली पसंद है. बट द फ्लेवर इज रियली गुड. आई हाईली अप्रिशिएट इट. एंड सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ फ्राइज जो मुझे अनम ने दिए भी नहीं थे. बट जस्ट फॉर हिज एफर्ट आई एम गोना हैव वन. Fries. Peri peri. I am back home. It is quite late at night and I want to sleep. But हम इस wholesome collaboration के एकदम end वाले step पे पहुंच चुके हैं and now it's time for, क्या बोलेंगे इसको, लास्ट मील ऑफ द डे या फिर अ मिडनाइट स्नैक, समथिंग लाइक दैट. बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि मुझे क्या मिला है. वैसे तो मैं काफ़ी फुल फील कर रही हूँ बिकॉज ईशान ने भी ना, मैंने बोला था कि तू मेरे लिए बनाएगा तो उसने 4 टाइप के शॉर्मा बना दिए एंड 2 उसमें से दिल्ली वाले थे, 2 मुंबई वाले थे. आई थिंक 4 में से 3 मैंने खाए हैं, 1 बेचारे उसने खाया था गाड़ी में बैठ के. सारे मैं ही गप गप करके खा गई. ओह, बिजली कट गई क्या? ओ माई गॉड, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन. So without any further delay, let's see what Anam has in store for me. सबसे last meal of the day में. Okay, so for the last thing of the day, I typically like to have some green tea or some chamomile tea about an hour or so before I go to bed. कभी कभी मैं सिर्फ गर्म पानी पी लेती हूँ और कभी कभी गर्म पानी with अदरक and nothing else. All great choices, great options. I have a feeling that you already have at least one of these on a regular basis, but in case you don't, there's something for this very last item of this diet swap where have some garam drink before you go to bed, and with that, good night. Feeling good don't last a long time. Been a long time coming, hitting stop signs. Cross-faded till I'm cross-eyed. Lost my sense of who I was, who I am. Missed the wrong guy. Thoughts gon' multiply, boss with it. Be a boss with it, cost with it. With the small. Finally, the last thing I put in my mouth for the day. I feel like such an accomplished person right now because मैंने आज के दिन में काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें ट्राई की है. राइट फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टू द सुशी टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्माज. आई ट्राइड माई बेस्ट कि अगर मैं एक चीट डे ले रही हूँ ना तो उसमें अपने सारे फेवरेट ऑप्शंस खा जाऊँ. एंड थैंक्स टू अनम आई हैड सच डिलिशियस फूड द होल डे. मेरा पेट भरा हुआ है और मेरी सोल अभी तक प्यासी है. सो आई एम गोना ड्रिंक माई कैमोमाइल टी एंड जस्ट रिलैक्स फॉर द डे. दिस इज एक्चुअली सुपर गुड. So thank you so much for watching this video guys. मुझे ऐसे डाइट स्वैप वीडियोस करने में बहुत मज़ा आता है. Thank you Anam for collaborating with me. If you guys have not watched the video on her channel where I am controlling her diet for 24 hours, you guys must watch it. Once again मैं ऊपर भी लिंक कर दूंगी और नीचे फर्स्टली ही आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनम की वीडियो का लिंक मिल जाएगा. गो शो हर सम क्वर्की स्क्वाड लव एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना हाउ आई डिड इन दिस वीडियो. लेट मी नो इफ देयर इज एनी अदर क्रिएटर जिनके साथ आप चाहोगे कि मैं डाइट स्वैप करूँ, जिनकी डाइट मेरी डाइट से आपको काफी अलग और अतरंगी दिखती हो ना. आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट विद दिस वीडियो वाज सो मच फन फॉर मी टू प्लान, टू एग्जीक्यूट ऑन अ बिजी हेक्टिक डे एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव यू गाइज टू शेयर ऑल ऑफ दीज क्रेजी एक्सपीरियंसेस. आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे. सुबह 11 बजे डॉट आ जाती है वीडियो. चाहे धरती फट जाए या आसमान मुझे निगल जाए, वीडियो तो आगे ही रहेगी. एंड अगर इतना सारा खाना खाने के बाद ये ग्लोई शक्ल आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram @thatquirkymiss. Till then, take care, have good food, have a blast, and I will see you guys next time. Bye bye.